Okay, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. And in today's session we are going to work on von Neumann architecture के questions, assembly language के questions, input output devices के questions के ऊपर आज हम लोग काम करेंगे. And we are going to see कुछ आप लोग के past very questions करेंगे, कुछ expected questions करेंगे, and I will be dealing जो हम लोग past very questions भी solve करेंगे. So मैं आप लोग को further explain करूंगा कि how to attempt actually the questions. So without wasting any time, starting with our first question, explain what are buffers and why they are used. एक बड़ा basic question है बच्चों, आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे. So buffers are actually temporary storage area. Why they are used? Speed of CPU is in gigahertz and the speed of input output devices is in kilohertz. To compensate the speed mismatch, we have buffers. तो ये जनरल बात बच्चों आप लोग को रिगार्डिंग बफर्स पता होनी चाहिए. ठीक है. मूविंग बिफोर मूव फॉरवर्ड एक पॉइंट और ऐड कर लें. एवरी IO device having their own buffers. Now moving further forward, अभी बता रहे बच्चों two benefits and two drawbacks of embedded systems. Now the question arises, sir, embedded system क्या होता है? तो बच्चों a system that performs a specific task. Like आप लोगों ने देखा होगा जर्नली अटेंडेंस मार्क करने के लिए आप लोग अपना कार्ड स्वैप करते हैं. तो दैट इज एन एम्बेडेड सिस्टम. आप उस मशीन से सिर्फ कार्ड ही स्कैन कर सकते हैं. आप उस मशीन के ऊपर यूट्यूब नहीं चला सकते, आप स्नैपचैट यूज नहीं कर सकते. सो सच सिस्टम्स आर कॉल्ड एम्बेडेड सिस्टम्स. सो वी नीड टू नो बच्चों टू बेनिफिट्स एंड टू ड्रॉबैक्स आप लोग को पता होने चाहिए ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. सो अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, so embedded system are relatively low cost to develop. They are dedicated for one task only. Consumes very less power. Best for real-time execution. So, but these are the benefits of using embedded systems. And when we talk about the drawbacks की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे. Difficult to update
with new technology finding errors in such systems is difficult can easily be hacked. One of my student, एक स्टूडेंट है मेरे A2 के अंदर, तो उन्होंने ये जो आप लोग के कार्ड रीडर मशीन होती है इसको हैक कर लिया था। तो बहुत आसान होता है, इतना कोई वो नहीं होता कि मैग्नेटिक वेव्स होती हैं आपके पास, तो उसी फ्रीक्वेंसी की अगर आप वेव्स क्रिएट कर लें तो आप इजीली क्या कर सकते हैं डिवाइस को, मतलब बहुत ज्यादा कोई सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप लोग इसको सिक्योरली यूज नहीं कर सकते, दे कैन बी इजिली हैक्ड। ठीक है, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस बच्चों दैट यू शुड नो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 and 2 that we performed. Okay, now ये बता रहे स्टूडेंट प्लेस कंप्यूटर गेम्स ऑन अ गेम्स कंसोल, गेम्स कंसोल लाइक एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन, तो पूरा आपके पास कंसोल कहलाता है। Identify two input devices and one output device used in games console. So what we call joystick, input device, it can be a joystick or it can be a gaming pad or game खेलते वक्त you also have microphones for the communication purpose with the team, and you can have a remote controller as well whenever you are playing games. Output device can be game कहाँ पे देखेंगे आप लोग, of course on screen, and it can be touch screen as well, but screen is fine, so you can easily write screen. Okay, Shamir, Abdul Ghafoor, we have answers, fine. Moving forward, अब ये बता रहे बच्चों game console has random access memory and read only memory, both. Two differences between RAM and ROM. So difference one, RAM is temporary storage, volatile in nature, while ROM is a permanent storage. Another difference बच्चों can be in RAM, read, write, both operations can be performed while in ROM only read operation can be performed. Give one use of RAM in games console. So game खेलते वक्त अब देखिए, you need to refer to the question, refer to the scenario. I know RAM के अंदर all the current softwares are being stored, but over here what you need to talk about, you need to talk about the games console.
ठीक है, सो गेम कंसोल के अंदर क्या हो सकता है रैम के अंदर? करंटली रनिंग game and one instruction of ROM that can be stored. So one use, so that can be startup instructions for games. So this was one of the questions that we performed. Let's move forward. Another question, बच्चों. Explain what is meant by register. So registers are a small portion of memory used for quick access of memory. And I think we are done. 2 marks. Explain the purpose of MDR used to hold data that is required for execution purpose. Fetched वाली बात कर दें हम लोग यहाँ पे. Used to hold data that is required for execution. And moreover, you can write also called memory buffer register. And I think that's more than fine. 2 marks का सवाल है. तो ये दो बातें आप लोगों ने कर ली. एक बात और लिख दें. Data fetched from memory is stored in MDR. So that's more than fine. Acha ji, name 2 registers other than MDR that is used in fetch execute cycle. So we have program counter. You can name any. You can write memory, address, register as well. X is a register. The current contents of X are the current contents of register X represent unsigned binary integer. We need to inform the binary value. So unsigned का मतलब बच्चों 1, 2, 4, 8, 16,
32, 64 and 128. तो जस्ट सम अप कर लें. 1 plus 128 plus 4, 120, 132, 132 and 2, 134 and 134 plus 1, that is 135. In the next step, ये बता रहे the current contents represents of X are in binary coded decimal. So binary coded decimal में क्या होगा भाई? 4 bits, 4 bits. 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8. So 8, 7. Now in the last ये बता रहे now the value, the contents of the register are stored in 2's complement. So 2's complement का मतलब बच्चों the most significant bit will be negative now. So minus 128 plus 4. So that will become minus 124 या minus 128 plus 7 कर लें. So this will become minus 121. अच्छा ये आप लोग ये कहीं मिस्टेक ना करना भाई, मैंने ऐसी बस वो साइन बनाया था, इज इक्वल टू का साइन है ये बस, minus 121. ठीक है भाई. सो मूविंग फॉरवर्ड, वो माइनस नहीं लगाया था मैंने एक्चुअली, वो सिंबल मैंने बस ड्रॉ करा था. आई यूजुअली मतलब मैं इस तरह का एक सिंबल ड्रॉ करके पॉइंट लिखता हूँ, तो दैट वाज दैट सिंबल. ठीक है भाई. मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे. सो दिस वाज अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर. मई जून 2018 का क्वेश्चन था. आई लाइक दिस क्वेश्चन, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन एज वेल. अक्टूबर नवंबर 2018 का सवाल था. लेट्स सी. ये बोल रहे फैच एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर आप लोग को रजिस्टर्ड ट्रांसफर नोटेशन की बात करनी है. दिस टाइम लेट मी सेलेक्ट ब्लैक. एमएआर. तो एमएआर में क्या चीज कॉपी की जाती है? तो बच्चों द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर. देन ऑल्दो दे नीड टू ड्रॉ, यहां पे भी ब्रैकेट बनाने चाहिए थे उन्हें, खैर नहीं बनाए, हमारा कंसर्न नहीं है. नाउ एमएआर की वैल्यू कहां पे कॉपी की जाती है? दैट वैल्यू इज बीइंग कॉपीड टू MDR, and at last the value of MDR is being copied to CIR. So examiner is awarding you 3 marks for this part. अब ये बोल रहे बच्चों इन द थर्ड इंस्ट्रक्शन एमएआर के ऊपर डबल ब्रैकेट यूज किए गए. स्टेट द पर्पस ऑफ डबल ब्रैकेट्स. ओके, पार्ट 2 में मैंने कोई मिस्टेक कर दी है भाई? क्या मिस्टेक है? नहीं नहीं, -87 नहीं है भैया, सिर्फ 87 है. वो मैं ये सिंबल ड्रॉ करता हूं भाई, दैट्स द सिंबल. मैं आप लोग देख सकते हैं हर पॉइंट को लिखने से पहले मैं ये सिंबल ड्रॉ कर देता हूं, तो वो सिंबल था. इट्स नॉट -87, इट्स 87. बाइनरी कोडेड डेसिमल 4 बिट्स 4 बिट्स. सो 8 के ऊपर 1 था, यहाँ पे 7 4 2 1 के ऊपर था. सो 8 and 7 is the right answer. ठीक है समरीन, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा जी, स्टेट द पर्पस ऑफ डबल ब्रैकेट्स. सो बच्चों डबल ब्रैकेट्स का मतलब वैसे आप लोग को पता ही है, एक दफा रिकैप कर लेते हैं बिकॉज इट्स अ रिवीजन सेशन. सो the value at an address pointed by MAR will be copied to MDR. MAR
only contain the address of the value that we need to copy. ठीक है? अच्छा जी, what is meant by interrupt? Ali Zagam ne, sir, MAR holds the address of the instruction, not the instruction itself. नो नो, ये ठीक नहीं है. देखो, हमें अली जगाम बेटा, हमें यहाँ पे ये बताना है कि एमएआर के अंदर जो लेट्स से हमारे पास 80 वैल्यू है एमएआर के अंदर, हमें ये बताना है कि 80 के ऊपर हमें जाना है, इस मेमोरी लोकेशन पे हमें जाना है. इस मेमोरी लोकेशन पे लेट्स से हमारे पास रखा हुआ था, इस मेमोरी लोकेशन पे हमारे पास रखा हुआ था लेट्स से अली. तो हमें अली को कॉपी करना है एमडीआर में. एमडीआर में हमें अली को कॉपी करना है, हमें 80 कॉपी नहीं करना. So we need to copy the value at an address pointed by MAR, not the address. ठीक है भाई? अच्छा, describe what is meant by interrupt. It's an easy question. Signal generated by software or hardware to stop the process of microprocessor for a certain period of time. Helps in मल्टीटास्किंग. अगर इंटरप्ट्स ना हो तो मल्टीटास्किंग बच्चों नहीं हो सकती. वी कैन नॉट परफॉर्म मल्टीटास्किंग इफ वी डोंट हैव इंटरप्ट्स. तो इंटरप्ट से बगैर मल्टीटास्किंग हो ही नहीं सकती. अच्छा जी, एस रैम डी रैम. So the first one, bachcho, does not need to be refreshed. So SRAM does not need to be refreshed. Mainly used in cache memory. Cache memory में बच्चों आपके पास cache memory is the fastest memory. So we go with SRAM. Has less complex circuit. DRAM requires higher power consumption. बच्चों दो सर्किट होते हैं DRAM के अंदर. एक सर्किट रिफ्रेश कर रहा होता है और एक सर्किट आपका रैम चला रहा होता है. तो पावर कंजम्पशन DRAM में ज्यादा होती है. Requires data to be refreshed. सो रिफ्रेश आपके पास डी रैम के अंदर रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. अनदर क्वेश्चन बच्चों, दिस इज अक्टूबर नवंबर 2019 में सवाल आया था. यू जस्ट नीड टू मैच द कॉलम. स्टोर द डाटा दैट हैज just been read from memory or is about to be written to memory. So लेट्स होल्ड दिस वाला. इसको जरा होल्ड करो. वैसे तो एमडीआर लग रहा है मुझे ये, लेकिन होल्ड करते हैं इसको जरा. Stores the instruction that is being decoded and executed. So that is CIR. CIR में आपके पास इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट भी किया जाता है, डिकोड भी किया जाता है. Store the address of the input device from which the processor. नहीं, कुछ मजा नहीं दे रहा भाई ये बात. Stores the address of the next instruction to be read. That is program counter, of course. Store the address of the memory location that is to be written. That is MAR. And बच्चों, of course, the first one now will be MDR.
यार, कभी इस तरह की कोई वर्डिंग के अंदर, वोकैबुलरी के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो तो होल्ड कर लिया करें उस पार्ट को। जब आप बाकी चीजों को सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि व्हाट दिस पार्ट वाज रेफरिंग टू। ठीक है, अच्छा जी। Many components of the computer system transfer data that uses buses. One of the example of the buses is address bus. Another bus, दो buses और बतानी है आप लोगों ने. So, and you need to inform the purpose as well. So one can be data bus. It's a bidirectional bus. Used to carry addresses and मतलब बहुत सारी चीजें कैरी गई, एड्रेसेस, डेटा and instructions between different components of computer. Another bus बच्चों can be control bus. Used to carry instructions for other components as well as timing signals as well. तो कंट्रोल बस आपके पास बच्चों कैरी करती है आपके पास इंस्ट्रक्शंस फॉर द अदर कंपोनेंट एज वेल एज द टाइमिंग सिग्नल एज वेल. ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड. State the benefit of increasing the address bus width from 16 bit to 32 bits. More number of addresses can be accessed directly. आप ज्यादा नंबर ऑफ एड्रेसेस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली. मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. अब yes Ghulam, I will be sending this PDF after the class. Another question, can we use slash in our answer? Yes Ali, you can use that. Sir, if we write registers instead of components, नहीं समरीन बेटा, you need to write components. यहाँ पे registers की बात नहीं हो रही. Register एक component है. अब component क्या मतलब क्या है? We are talking about input output devices, we are talking about the memory, we are talking about RAM, we are talking about ROM, we are talking about the register. सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं. So components का मतलब सारी चीजें आ गई आपके पास. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी आ गई, मेमोरी भी आ गई, सेकेंडरी मेमोरी आ गई, प्राइमरी मेमोरी आ गई. अब ऑफ कोर्स प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम भी आएगी, रैम के अंदर रजिस्टर्स भी आएंगे. सो ओवरऑल हमने यहाँ पे बात कर ली. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. ओके, लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स. Dash is a sequence of instructions that are given an identifier. These instructions may need to be executed several times. तो बच्चों लो लेवल के अंदर सेवरल टाइम्स आपको एग्जीक्यूट करना है. सो लो लेवल के इंस्ट्रक्शंस के अंदर एक फंक्शन या प्रोसीजर को क्या कहते हैं? तो वी कॉल इट अ
मैक्रो, दिस इज एक्चुअली अ फंक्शन या फिर प्रोसीजर। तो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर फंक्शन या प्रोसीजर्स को वी कॉल एज मैक्रोस। Another one, बच्चों, that is an instruction that tells the assembler what to do, so that is directives. मैंने आप लोगों को क्लास में एग्जांपल भी दी थी कि प्रिंसिपल स्कूल का क्या करता है, पढ़ा मतलब करता कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सारी चीजों को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि इस टाइम पे क्लास होगी, ये क्लास लेंगे, वो क्लास होगी, एक्स वाई जेड। ठीक है। द प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट कैन बी पुट इनटू सेवरल ग्रुप्स। वन ऑफ दीज ग्रुप्स इज jump instructions, arithmetic operations, addressing modes, LDD, LDR, input output, data movement. So you can write any of these over here. Moving forward, बच्चों. Now, logic gate भी भाई आज के हमारा टॉपिक का पार्ट था. So we need to perform logic gates as well. So I won't be taking much time to perform this question. Hardly मैं 1 मिनट में सवाल नहीं, 1 मिनट ज्यादा हो गया, 2 मिनट में सवाल ये सॉल्व करता हूँ. द फर्स्ट थिंग, ए और बी क्या हो रहे हैं, ब्रैकेट्स को पहले देखते हैं. ए और बी क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं. तो दिस इज ए, दिस इज बी, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं. नाउ सी और डी क्या हो रहे हैं, जॉर हो रहे हैं. तो दिस इज सी, दिस इज डी, एंड दे आर बीइंग जॉर्ड. ये दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या हो रही है, एंड हो रही है. अच्छा सॉरी, ए के आगे नॉट भी लगा हुआ है बच्चों. ये ओवरऑल नहीं लगा हुआ, सिर्फ ए के आगे क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है. अगर ओवरऑल लगता तो एक और ब्रैकेट आता हमारे पास. तो ए के आगे नॉट भी लगा हुआ है, सो नॉट लगा दें ए के आगे. और ये आखिर में बच्चे दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं. एंड दैट इज इक्वल टू एक्स. 4 marks. We need to create same statement है, नहीं different statement है. Now we are having another statement and we need to complete the truth table for this statement. So let me perform this as well. मैंने यहाँ पे सबसे पहले ए और बी निकाल लिए, इसको मैंने नंबर दे दिया. This will be 1, this will be 2, this will be 3, एंड आखिर में ओवरऑल क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको भी एक नंबर दे दें, 4 नंबर दे देते हैं. तो सबसे पहले मैंने ए एंड बी निकाल लिए. 1, ए और बी क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं. सो 0 0 0 0 0 0 1 1. नाउ 4 निकाल लेते हैं बच्चों. 4 क्या है, ए और बी का नॉट निकालना है. तो दैट इज 4 1 1 1 1 1 1 0 0. नाउ बी और सी 2 निकाल लेते हैं. बी एंड सी आर बीइंग जॉर्ड. मैंने इसको 2 नंबर दे दिया. बी एंड सी ये रहे मेरे पास. 0 1 1 0 0 1 1 0. नाउ ए के साथ क्या हो रहा है, ये एंड हो रहा है. दिस इज ए, दिस इज 2, ये दोनों आपस में एंड हो रहे हैं. तो आई नंबर्ड इट एज 3. एंड कर दें. 0 0 0 0 0 1 1 0. नाउ ओवरऑल 4 एंड 3 क्या हो रहे हैं, और हो रहे हैं. तो वी हैव 3, we have 4, and that will be equal to x. So इनको और कर दें. 1
1 1 1 1 1 1 0. So that will be the right answer, bachcho, for this logic gate moving forward. ओके, एक क्वेश्चन आ गया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का. Dominic uses tablet computer to complete the work. He records video on his work to send to his colleagues to watch at a later date. We need to identify which device is input. Touch screen. तो बच्चों टच स्क्रीन इज बोथ इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है. वेबकैम, so webcam is an input device. Microphone is an input device. Fingerprint print scanner, that is an input device. 2 marks. 4 marks देने चाहिए थे भाई. Okay. An external speaker is plugged into tablet computer. अब आपको बताना है वर्किंग फॉर इंटरनल वर्किंग फॉर द स्पीकर. So changes in audio signal causes the direction of the electric current to change. This determines the polarity of electromagnetic. The vibration creates sound waves. An electric signal is sent to the speaker. So I think बच्चों this will be the first task. सबसे पहले एक electric signal send किया जाता है speaker को. Electromagnetic is repelled by or attract to the permanent magnet. Electric current passes through the coil. So the next step बच्चों, पहले हमने करंट भेजा, देन कॉइल से करंट पास हुआ, एंड जैसे ही फिर बच्चों क्या होता है, द करंट इन द कॉइल क्रिएट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एंड देन बच्चों changes in the audio signal causes the direction of the electric current to change. This determines the polarity of the electromagnetic, and the vibration creates sound waves. The movement of coil causes the diagram to vibrate. B तो आखिरी होगा क्योंकि आखिर में आपके पास साउंड क्रिएट हो रहा है. एंड बचा क्या, डी. तो फोर्थ विल बी डी. डी क्या है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज रेपेल्ड एंड अट्रैक्ट टू अ परमानेंट मैग्नेट. सो डी एंड बी, 4 मार्क्स. ठीक है भाई. सो एक ये क्वेश्चन आया हुआ था एक्सटर्नल स्पीकर्स का, इंटरनल वर्किंग ऑफ एन स्पीकर. अनदर क्वेश्चन बच्चों ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस. Okay, again we need to differentiate LCD monitor. So that is a output device, microphone input device, keyboard input device, touch screen both. Now Cal has built a 3D printer to show students how it works. So we need to just mention the steps again. अब ये मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोग को सेंड किए में बच्चों, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के 3-3 4-4 मिनट की वीडियोस है, उनको गो थ्रू करेगा, देखेगा, तो आप लोग को ये सारे आइडियाज क्लियर हो जाएंगे कि हाउ एक्चुअली दीज डिवाइसेस आर वर्किंग. ठीक है. नहीं नहीं, ये ए लेवल्स की है भाई. ए लेवल्स में भी ये आपके पास अफनान आता है सिलेबस के अंदर, ओ लेवल की नहीं है. अच्छा जी, ऑब्जेक्ट इज डिजाइन यूजिंग कंप्यूटर एडेड. ये आप लोग के पेपर का ही सवाल है, मई जून 2020 में ये सवाल आया था. Object is designed using the computer-aided design software. Stepper motor, fan cools down. Nine software split the object into slices. The nozzle extracts the molten plastic. The data about the slices is sent to the printer. तो सॉफ्टवेयर बच्चों सी पहले सेकंड होगा आपके पास. सॉफ्टवेयर ने ब्रेक करा,
डाटा इनटू स्लाइसेस, देन डाटा हम लोगों ने सेंड करा प्रिंटर को, द सॉलिड प्लास्टिक इज मेल्टेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू दैट, देन हम लोग स्प्रे करेंगे, आई गेस स्प्रे, स्प्रे करने के बाद हम उसको कूल डाउन कर देंगे, नहीं, नोजल से वो मोल्टन प्लास्टिक निकलेगा, एंड जब तक आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता वो मोल्टन प्लास्टिक निकलता रहेगा, आप लेयर बाय लेयर कंप्लीट करेंगे, एंड एट लास्ट आप उसे कूल डाउन कर देंगे अपने ऑब्जेक्ट को। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ रैम एंड रोम इन 3D प्रिंटर्स। तो अब आप लोग को यहीं पे रेफरेंस करते हुए, 3D प्रिंटर को रेफर करते हुए आप लोग को यहाँ पे क्या करनी है, रैम एंड रोम के बारे में बताना है। रेफरेंस इज कंपल्सरी, लाइक you are going to write RAM stores the currently running part of the 3D printer software. Data about the layers, layer by layer printing होती है, data about the layers will be stored in RAM. And when you talk about the ROM, so the operating system that is used to start the 3D printer will be stored in ROM, or the startup instructions for the 3D printer will be stored in ROM. ऐसा आपके ग्रुप के ऊपर मैंने कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स शेयर करे में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के। आई टोल्ड यू पीपल, यू जस्ट नीड टू रीड द स्टफ, लाइक स्पीकर की अगर हम लोग बात करें तो बस रीड करना है आपने। मैंने जो रिवीजन गाइड दी उसमें मैंने डाला हुआ है, जस्ट रीड करना है, रीडिंग करनी है। जो बोरिंग स्टफ है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, ये ओ लेवल वाला पार्ट है सारा, स्पीकर, लेजर प्रिंटर एंड टच स्क्रीन, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दैट स्टफ, ठीक है, रीडिंग मटीरियल है सिर्फ, नथिंग एल्स। Yes, of course, they are available over there as well. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा जी बच्चों, नाउ द एग्जामिनर इज आस्किंग, कि मैंने एक रैंडमली क्वेश्चन पिक किया है, स्टेप 1 से 6 डिस्क्राइब वन पास of a two pass assembler. So two pass assembler के आप, of course you people remember the steps, हम लोगों ने काफी डिटेल में बात करी थी about the one pass and the two pass assemblers. So यहाँ पे आप लोगों को वही बात करनी है। If the assembler read the assembly language instructions, if already in the symbol table 9, when it meets symbolic address, it checks to see if it is in symbol table. So bachcho, this will be the second step. If it is not, then it is added in the symbol table. If already in the symbol table, then it checks to see if the absolute address is known, and if it is known, then it is entered, and if it is not known, we write unknown. So these are the steps for two pass assembler that we have seen. Acha ji. Moving forward, we have another question बच्चों यहाँ पे,
एक असेंबली लैंग्वेज का क्वेश्चन आ गया हमारे पास यहाँ पे। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा सवाल लगा मुझे, अक्टूबर नवंबर 2020 में आया था। टिक वन बॉक्स टू इंडिकेट which one of the following statement is true after the program execution. Memory location 4204 contains 400. मेमोरी लोकेशन 204 कंटेन्स नथिंग, एम्प्टी है भाई। ठीक है, तो हम इसको टिक नहीं करेंगे। मेमोरी लोकेशन 204 कंटेन 41, नो, ब्लैंक है वो तो। मेमोरी लोकेशन 204 कंटेन्स, कुछ है तो नहीं भाई। अच्छा सॉरी, वी हैव द इंस्ट्रक्शंस। हमें पहले ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाने। LDD 200 में क्या रखा हुआ है भाई, 10। तो एक्यूमुलेटर के अंदर आपके पास 10 लोड हो गया। एड 201, 201 में क्या रखा हुआ है, 20। तो ऐड कर दिया आपने, एक्यूमुलेटर की वैल्यू अब क्या हो गई, इट विल बिकम 20। ऐड करा तो इट विल बिकम 30। ऐड 202, तो 202 पे क्या रखा हुआ था भाई हमारे पास, 5, 35। सब्ट्रैक्ट 203, 203 पे क्या था भाई, 6, तो ये हो जाएगा 29। STO 204, तो 204 में क्या आ जाएगा भाई, जो आपके एक्यूमुलेटर में है दैट इज 29, तो 29 आ जाएगा। एंड मेमोरी लोकेशन 204 कंटेन्स 29। सो इतना बड़ा सॉल्व करने के बाद मुझे 1 नंबर अवार्ड कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये। एटलीस्ट 3 नंबर अवार्ड करने चाहिए थे। मैंने इतनी सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करी है यहाँ पे, एंड 1 मार्क्स के लिए, चले खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, अगेन टिक करना 1 नंबर दे रहा, अवार्ड कर रहा है। चलें कर लेते हैं। LDM, LDM मुझे याद नहीं आ रहा बच्चों क्या होता है, क्या करूंगा, ऊपर चार्ट में देख लूंगा। LDM इज इमीडिएट एड्रेसिंग, तो जो नंबर है एक्यूमुलेटर में लोड कर दो। तो LDM 120, this means accumulator now contain 120. Add 1 to 1, 1 to 1 में 2 है, now the value of accumulator will become 122. Subtract 122, 122 में क्या था भाई, 4, so now accumulator will become 118. After this STO 120, 120 में स्टोर कर दो whatever the value is in accumulator, so 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, 118, 118, we are done, 1 marks। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, अगेन 1 मार्क्स। LDI 200, LDI आई थिंक इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, लेट्स चेक। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है फाइन। तो इसका मतलब 200 के अंदर एक और एड्रेस होगा। मैं गया 200 के पास, वेयर इज 200, दिस मींस 200, दिस विल एक्ट एज अ सेकंड एड्रेस। 202, मैं 202 के पास गया, तो 202 पे क्या रखा हुआ था, 201, सो एक्यूमुलेटर के अंदर 201 विल बी लोडेड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, एड 200, सो 200 पे क्या रखा हुआ था भाई, वी वर हैविंग 202, तो इसमें अगर मैं 202 ऐड करूं तो दिस विल बिकम 403। आफ्टर दिस ऐड 201, तो 201 पे क्या रखा हुआ है, 203 ऐड करूं अगर मैं, तो दिस विल बिकम 606। उसके बाद बोला STO 205, तो 606 स्टोर हो जाएगा, एंड वी हैव 606। आइडेंटिफाई 2 मोड्स
of addressing that are not used in part A, B and C. So index addressing use नहीं हुआ. Index addressing is not being used. और कौन सी एड्रेसिंग यूज नहीं हुई हमारे पास? इमीडिएट यूज हो गई थी आई गेस. डायरेक्ट एड्रेसिंग यूज नहीं हुई, एलडीडी हो गई थी. डायरेक्ट भी हो गई, इनडायरेक्ट भी हो गई, इमीडिएट भी हो गई, इंडेक्स नहीं हुई थी हमारे पास. और रिलेटिव यहाँ पे शो तो नहीं करी, बट वी हैव रिलेटिव एड्रेसिंग एज वेल, सो वी कैन नेम relative addressing is not being used over here. So 2 marks. Now बच्चों आप लोगों को यहाँ पे इंस्ट्रक्ट करना है, बताना है. 3 मार्क्स आपका एग्जामिनर आप लोगों को अवार्ड कर रहा है कि ये किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस हैं. STO, स्टोर. तो बच्चों स्टोर का इंस्ट्रक्शन एक्चुअली क्या करता है? ये डाटा मूवमेंट है आपके पास. आप एक जगह से दूसरी जगह क्या करवा रहे हैं? डाटा को मूव करवा रहे हैं. तो दैट इज डाटा मूवमेंट. GPE jump, JPE jump, add is an arithmetic. LDD again data movement. Increment के अंदर हम लोग +1 करते हैं, so that will be counted in arithmetic. Out, input, output. So these are the type of instructions. We call them as group of instructions like arithmetic, data movement, jump instruction, input, output. And you can see it was an easy question as well. ओके बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन कहीं और से पिक किया. भाई आप लोग के पास पेपर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि इस साल इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में. सो लेट्स सी, जरा करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व. द एनवायरनमेंट इन अ वेरी लार्ज ग्रीन हाउस इज मैनेज्ड बाय अ कंप्यूटर सिस्टम. ग्रीन हाउस, large greenhouses. The system uses a number of different sensors that indicate temperature sensors. In addition, the system controls a number of heaters, windows, and sprinklers. State one other type of sensor. Okay, कौन-कौन से use हो गए? Temperature sensor use हो गया है, बस सिर्फ temperature use ही हुआ है, sensor use हुआ है. State one other type of sensor that could be used in this system. So, large greenhouse system, number of different sensors include temperature. In addition, the system control the number of heaters, windows. हमें heaters को control करना है. So, humidity sensor is the best. Moisture sensor भी आ सकता है आपके पास. Greenhouse you can also write the pH sensor as well. So, there are multiple options. Justification बस आप लोग को देनी होगी. So, I can go with humidity sensor. The reason can be to maintain right level of moisture in greenhouse. Okay, describe why feedback is important in this system. अब एग्जामिनर सवाल कर रहे हैं बच्चों कि why feedback is important over here. So this is
a continuous process the output from system will again be used as an input to maintain the parameters. Output from system will decide actions taken by system, like to open windows or to open sprinklers. Also affect the readings taken by sensors. So it's a continuous process बच्चों. The main बात तो यही है, जो आउटपुट आ रहा होगा हमें वो वापस से एज एन इनपुट चाहिए, ताकि वी कैन डिसाइड कि हमें अपनी मशीन ऑन करनी है, विंडोज ऑन करनी है, या स्प्रिंकलर्स ऑन करने हैं. what we need to do. So it's a continuous process. That's why feedback is important in this system. System make use of number of parameters. These parameters are used in the code that runs the system. State one of the parameters used in controlling the temperature of the greenhouse. So parameter का मतलब बच्चों highest temperature, lowest temperature, कोई interval आपने temperature का define किया हो तो सबसे keeping it simple, highest temperature, highest allowed temperature. Explain how the parameters identified in part C is used in the feedback process. तो ये O level वाला थोड़ा सा पार्ट है. Value sensed by sensor is provided to microprocessor, where it's being compared with a preset या pre-stored value. To decide further action. So that was the part बच्चों that you should know. Moving forward, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे जरा.
अब देखिए जरा, ये वाला पार्ट मजेदार है, रीड करते हैं। ऑल्दो इस पार्ट में 1 नंबर मिल रहा है, बट दिस पार्ट इज लिंक विद द नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट से ही लिंक करता है, ये 3 मार्क्स का सवाल है अगले पार्ट में। बोले देयर आर 8 सेंसर्स, 8 टेम्परेचर सेंसर्स numbered from 1 to 8. Reading from the sensors are stored in 16-bit locations. These are the locations: 4000, 4001, 4002, and 4003. Memory location address from 4000 to 4003. Each memory location stored 2 sensor readings as 2 unsigned binary integers. Sensor 1 is stored from 15, 8 to 15. So 8 से लेके 15 तक this is sensor 1. और sensor 2 क्या होगा बच्चों फिर? This will be sensor 2. Sensor 3 क्या होगा फिर हमारे पास? 3. Sensor 4 क्या होगा हमारे पास फिर? 4. Sensor 5 क्या होगा हमारे पास फिर? 5. Sensor 6 क्या होगा हमारे पास फिर? And so on. 7 and 8. Give the binary value of the current reading for sensor 5. So बच्चों, this is sensor 5. And we need to give the binary value. So 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 4, 8, 16. So 16 plus 4, that is 20. Since the number were unsigned, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दिया? 20 will be the right answer. Now moving forward, अभी बोल रहा है बच्चों, reading for sensor 5 is used in a calculation. Calculation is carried out by 2 assembly language instructions. The first instruction load the content of 16-bit memory location value for sensor 5. So sensor 5 बच्चों किस memory location के ऊपर है? You can see that is 2004. So I need to load this memory location. So LDD 2002. अभी मेमोरी लोड हो गई। आगे बोल रहे बच्चों, the second instruction move the sensor 5 so that 16-bit values is the value of sensor 5. वो बोल रहे बच्चों, अब ये ना sensor 5 को पूरा का पूरा 16 बिट में स्टोर कर दो। मतलब ये जो 8 बिट हैं, इन 8 बिट्स को आपको आगे राइट साइड पे 8 बिट्स मूव करवाना है। तो जब आप इसको राइट साइड 8 मूव करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 0 0 0 0 आ जाएंगे और आपका पूरा सेंसर 5 क्या होगा? यहाँ पे मूव हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट बच्चों, इसलिए ये सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ पे अब आप लोग को पता होना चाहिए, यू आर गोइंग टू यूज LSR। LSR क्या करेगा? सारी 8 बिट्स को यहाँ पे 8 बिट्स को मूव कर देगा यहाँ पे, और ये वाले पोर्शन में क्या करेगा? जीरोस को इंट्रोड्यूस करवा देगा। तो 8 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास। तो ओवरऑल पूरी लोकेशन के ऊपर सेंसर 5 आ जाएगा। दिस विल बी LSR#8। तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। ये एक बड़ा अच्छा पार्ट है इसका जो आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, अनदर क्वेश्चन बच्चों, लास्ट बस क्वेश्चन रह गए हमारे कुछ। दो क्वेश्चन बीच में मैंने स्किप करे। यू कैन परफॉर्म दोस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। आसान सवाल है, वो आप खुद कर सकते हैं। ये एक सवाल और है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये वाला सवाल मैं आप लोग को खुद करवा देता हूँ, एंड आई थिंक दैट्स मोर देन फाइन। अच्छा जी, वो बोल रहे बच्चों, देयर आर 2 एरर्स ओवर हियर इन द रजिस्टर
So PC1 is line number 2. Description of the error is PC+1 होता है आपके पास. Correct statement will be PC will be equal to PC+1. Description आप लोग खुद लिख लेगा. Another error बच्चों, double arrows आते हैं आपके पास. So line 3 सिंगल एरो नहीं आएगा भाई, सिंगल ब्रैकेट नहीं आएंगे. You will be having double brackets. ओके आपको पहला बच्चों इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है और 101 हियर यू गो. 101 पे बच्चों ये रखा हुआ है आपके पास. तो बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा और सो 1111 0 0 0 0 वी नीड टू परफॉर्म और बिट वाइज. सो अगर एक वैल्यू भी 1 है द रिजल्ट विल बी 1. सो 11111111. So the new content will be 11111111. Now XOR 15 क्या होता है आपके पास? 1111 0 0 0 0. You need to perform XOR. XOR के अंदर different के ऊपर 1, same के ऊपर 0. So this will be 0 0 0 0 1 1 1 1. This will be my final answer. So 0 0 0 0 1 1 1 1. After this LSR2, so LSR, this means ये दो बिट्स जो है बच्चों क्या होंगी? खत्म, gone. ठीक है. So the new value will be 0 1 0 1 0 1 and 2 zeros will be introduced in the right hand side. LSR #0. Another one बच्चों and 104 पे क्या रखा हुआ है? ऑल जीरोज. एंड मतलब मल्टीप्लाई, एक वैल्यू भी जीरो की सब जीरो हो जाएगा. तो अगर मैं यहाँ पे एंड 0 करता हूं तो ओवरऑल पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा मेरे पास? ऑफ कोर्स इट विल बिकम 0. सो द फाइनल रिजल्ट विल बी 0 0 0. 4 0 ही है ना, 8 1 2 3 4 1 2 3 4. सो ऑल zeros that we have. ठीक है बच्चों, तो आज इसको हम लोग अब यहीं तक होल्ड करते हैं और इन आवर नेक्स्ट सेशन दैट इज ऑन वेडनेसडे. ओके वी हैव अ क्वेश्चन. सर न्यू बाइनरी कैसे आ रहे समझ? है ना बेटा, सिंपल है बड़ा ना. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बोल रहे और परफॉर्म करो 101 के साथ. तो 101 मेमोरी लोकेशन ये रही. तो ये मैंने मेमोरी लोकेशन यहाँ पे लिखी पूरी और मैंने और ऑपरेशन परफॉर्म किया. अब और के अंदर क्या होता है ये अब आपको पता होना चाहिए. और के अंदर अगर एक वैल्यू भी 1 है, इट इज बिट वाइज. ये बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है लाइक दीज 2 बिट्स. तो अगर एक बिट भी 1 है द रिजल्ट विल बी 1. अगर एक बिट भी आपके पास 1 है द रिजल्ट विल बी 1. तो और के अंदर ये होता है. सिमिलरली वो जोर बोल रहा है, जोर में सेम के ऊपर 0, डिफरेंट अगर है तो आपको 1 आता है. डिफरेंट ही 1 आ गया बिट वाइज, फाइनल रिजल्ट आपके पास आ गया. सिमिलरली बिट वाइज एंड बोल रहा है तो मैंने इन दोनों बिट्स को एंड किया. एंड में अगर एक वैल्यू भी 0 तो द फाइनल रिजल्ट विल बी 0. तो 0 0 0 सब 0 है तो मतलब एंड कर रहे तो 0 ही होगा आपके पास. ठीक है बच्चों, तो आई विल बी शेयरिंग दिस फाइल विद यू पीपल ऑन द ग्रुप. तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं. इंशाल्लाह ताला अगले सेशन के अंदर हम लोग आएंगे और अगले सेशन में अगेन कुछ मल्टीपल पास पेपर के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के पास लेकर आऊंगा. कुछ मेरे अपने क्वेश्चंस होंगे, कुछ पास पेपर्स के होंगे
और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन आवर नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह ताला। आज फिर यहीं तक होल्ड करते हैं, अगले सेशन में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज एंड स्टे सेफ। मोहित ओके, मैं A2 ग्रुप में भी भेज देता हूँ।